अभी हम लोगों ने ये मोर्चा चलाया है कि सेव गर्ल चाइल्ड, Okay. ना, and then empowering women empowerment. Today we have to shift away from there because boys are lagging behind girls. Okay. So I have written an article also, boys pull up your socks also. Good evening and welcome to the Saturday Show. It is my honor to introduce you to our today's guest, Mr. Dani Sulu. He is the Secretary to Government of Arunachal Pradesh looking after disaster management. Clearing the prestigious civil service exam conducted by UPSC, one of the toughest exams not just in India but around the world. The first Apatani IDAS officer from the batch of 1997. Please welcome Mr. Dani Sulu. Welcome, sir. So good evening. Good evening. How are you doing? Yeah, fine. Yeah. Sir, आपका बहुत interestingly, you have been a student Zero Higher Secondary School पे, and अभी Zero Higher Secondary School का नाम change हो गया to your late father's name. Please tell us about it. So it's like this. My father was the first batch who studied in government higher secondary school. Initially, this school was there in Old Zero. Okay. It was shifted down, and with that, my father and all they came down and studied here. And then my father, after sometime during 1968-69, when the first Panchayati Raj was introduced, he was the first Panchayat leader among Arunachal Pradesh, the first batch of the Panchayat leaders. And then among them, they had the what we call assembly today. They had that agency council. So he was a member of agency council who used to decide for the future of NEFA. Having that distinction, I used to hear from when I was a kid, and my father used to tell, but I never saw anything on record. Okay. So when I came back to Arunachal, I was secretary Department of Research, and I went to the research department. They have a very good library. Okay. There when I saw lots of articles about my father, their meetings, his photos, all were there. Okay. So what we heard by word of mouth came into the documented evidence, and the photos. So then I got interested, and then we searched, and then his batch, all of them had moved ahead, and in different places, the society had recognized them. And see, so when this idea was floated, and when the matter was taken to the government also said yes, we should recognize the first founding fathers of Arunachal Pradesh. Okay. So that is on that line, recognizing the founding fathers of Arunachal Pradesh. The government higher secondary school has been named as Dani Kunya Government Higher Secondary School. And I also passed out from my class 12. I passed out from Dani Kunya Government Higher Secondary School in 1992. Okay. You must be very proud of your father. Indeed, very proud of my father. I read somewhere about you wrote something around the line कि सब हमको पापा का नाम से ही कहीं जानेगा क्या? कभी मेरा नाम से भी पापा हमको जानने से. You had this. Oh yeah, that was it. Actually, see, I don't know. I have my own sons now. We also have certain rentings going on. I also used to have with my father. So whenever I go around, that time my father was quite. This generation they may not know about him, but those time in 1970s and 80s, he was quite known. So wherever I go, they will always say, "Oh, Dani Kunya son." So I felt a bit awkward. It hurt me a bit. Why should I always be known by my father's name? Why can't I be known because of me? And someday I said that, someday I make sure that you will be known as Dani Sulu's father. No, but that was a friendly mentoring. And it did come true.
because you made sure you cleared one of the toughest exam in not just India but the world, and becoming an officer. So abhi kahin na kahin to you have engraved your name. That way, so everyone will remember your father कि उसका पापा है. Hopefully. So you always aspired to be a civil servant. See, yeah, actually, having said that to my father, and then my father always glorifying the civil services, Okay. IAS, IPS, and he used to take the name of the Tamoriwa, who was a circle officer long time back. Okay. So when parents talk about such personalities, it gets into the psyche of the children. I feel, means at least when my father used to think, I used to think, okay, I have to do something. I also have to go in that line. So yeah, I had in subconscious mind, I always wanted to be there. Okay. So luckily or unluckily, I am there. So I think one of the lucky guys. So your father was one of the first person to push you towards UPCS. Yes. I said, he never said you take that exam. He never said you become IS. But the way he used to refer, I felt he wanted me, and then that used to give me lots of insight into the services. So I decided someday I will get into civil service. आप अपना सिविल सर्विस प्रिपेयर करने से पहले यू ऑल्सो आप यूडीसी भी ज्वाइन किया था, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. यस यस. फिर उसको ज्वाइन करके फिर यू लेफ्ट इट, आप छोड़ दिया. हाँ, एक्चुअली इट इज़ विथ, मैं थोड़ा सा अपना वही बता देता हूँ. सी द स्टडीज़ मेरा जो है एकदम हिकअप में चला है, नॉट वेरी वेल. आई जॉइन व्हेन आई वाज चौथा में मैंने बीकेवी शहर में ज्वाइन किया, केजी टू क्लास 3. देन फ्रॉम देयर आई जॉइन द बीकेवी बालीजान टिल क्लास 5. एंड देन फ्रॉम देयर आई जॉइन द डोनीपोलो विद्या भवन. आई एम द फर्स्ट बैच 1989 में. या मैंने क्लास 10 पास किया, 5 years. सो आई डोंट नो, आई वॉज वेरी, मुझे ना किताब पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लगता था. तो आई यूज टू रीड अमर चित्र कथा, कहानी, वो पूरा इतना पढ़ा था. देन जब मैं स्कूल से बाहर निकला है, कंपटीशन वर्ल्ड में आया तो रिटन एग्जाम में, दैट बिकेम ए वेरी नेचुरल मीन्स एसेट फॉर मी. तो जहाँ मैं बंदों लोगों को पढ़ के याद करना पड़ता था, वो तो मेरा नेचुरल पढ़ाई में हम कवर कर चुका था. सो माई फ्रेंड्स ऑल हैड गॉन, डॉक्टर इंजीनियर करेगा बोलकर सब निकल गया. आई वॉज वन ऑफ द टॉपर इन क्लास 10 ऑल्सो. मैं उस समय में नेशनल NTSC बोलता है, वो सब भी मिला था. तो एवरीवन एक्सपेक्टेड दैट आई शुड बी ए डॉक्टर एंड इंजीनियर. इनफैक्ट व्हेन दे सेड सो मच, तो मैं ना रिबेल हो गया. आप लोग इतना करना है तो हम तो बनेगा ही नहीं बोल के. तो मैं वो छोड़ दिया और आर्ट्स में चला गया था. तो 1 year ब्रेक भी हुआ था. तो इसलिए 94 में व्हेन माय 94 में मेरा वो एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम का बाद में मैं क्या करेगा सोचा है. तो आई हैड अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी. तो यूडीसी में मैं क्या, तो उधर में भी मैं कुछ बिना प्रिपरेशन के किया है. तो अभी जैसा बोला है, स्कूल में जो पढ़ाई सब आया, तो ऐसा हो गया कि मीन्स मेरा बाद में जो सेकेंड आया था, उसका रिटर्न प्लस इंटरव्यू जोड़ने से भी मेरा रिटर्न में नहीं पहुंच पाया था. सो आई जॉइन देयर 94 जून में मैंने 2 महीना उधर काम किया. देन जुलाई आई केम बैक. बट देन दैट वाज ए डिफरेंट स्टोरी. आई केम बैक एंड आई लेफ्ट दैट सर्विस. फिर मैं वो करा, उसका भी एक अलग सा है. बिकॉज मैं बता देता हूँ, आई मेट माई वाइफ 94 में. मैं ना वो यूडीसी ज्वाइन करने के लिए बोमदिला में गया था. तो शी वाज इन क्लास 12 एंड शी वाज वेरी गुड लुकिंग. देन हमको ना बहुत अच्छा लगा. आई वांटेड टू मैरी हर. सो यू टू मेट इन बोमदिला. तो देन शी वेंट टू कॉलेज एंड हम लोग है ना एक अपतनी में, यू ऑल आर वेरी रिलेटिवली यंग, तो पता नहीं होगा. लेकिन हम लोग का समय में क्या होता था, जो लोग ऑफिसर लोग ना, बच्चा लोग को शादी कर लेता था.
तो हम सोचे कि शी इज सो गुड लुकिंग एंड ऑल, कोई ऑफिसर लोग इसको पता लेगा तो ठीक नहीं होगा बोलते। तो हम अगर यूडीसी बाबू ही काम करते हैं तो आई तो थोड़ा सा हमको भी थोड़ा इज्जत में थोड़ा सा ये लगा, तो आई लेफ्ट द सर्विस। आई थॉट आई विल ऑल्सो बिकम ऑफिसर। ऐसा सोच के मैं वो यूडीसी को छोड़ के शिलोंग जाके फिर पढ़ाई किया। So you married her in the year नहीं 95। सो 94 में 2 years कोर्स होता था, 94 आई हैड डन, देन थर्ड ईयर का 2+1 वाज द प्रैक्टिस दोस डेज। सो 94 में आई हैड डन 2 years वाला बीए, देन ऑनर्स हमने 95 में कर दिया था एंड शी हैड गॉन ऑन फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे के आ गया। तो सो आई थॉट आई शुड कैच हर यंग ना, तो 95 में हमने शादी कर लिया उनसे। So that same year I took my civil service exam also. तो प्रीलिम्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं तो you cleared it. I cleared। तो बाकी लोग तो बहुत मेहनत करना पड़ता था, लेकिन माय बीकेवी डेज हेल्प मी अ लॉट। डोनीपोलो एंड बीकेवी डेज, वहाँ में जो न्यूज़पेपर में इतना इंटरेस्ट रहता था और टीवी न्यूज़ में इंटरेस्ट रहता था, मैगजीन्स में इंटरेस्ट रहता था, स्पेशली अमर चित्र कथा ये कहानी में इंटरेस्ट, ऑल दोस थिंग्स आर देयर इन द जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वही है। So it became my natural ground. Okay. So you were just doing what you usually do. Yeah, what I love to do is there in the competition. तो उतना एक्स्ट्रा नहीं पड़ता था। No, but that is also a very good thing, क्योंकि that's why parents keep on saying ना good habits. Hobbies बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है। तो hobbies जरूरी है। And discussion around the children is also very important. Very important. से मैं बोला ना, मेरा पिताजी तो IAS करो, सिविल सर्विस करो बोला नहीं है, but the way he used to talk around me, it clicked my mind. Left a mark. Yeah, it left a mark in my mind. So ना वो पेरेंट्स लोग encourage करना है, किताब रख देना है और deliberation भी ऐसा करना है कि which you can imbibe in the children. At least for me it has been quite helpful. Presently, you are the Secretary of Disaster Management, and but first you joined as Arunachal Pradesh government as the Secretary State Finance Office. Yes, State Finance Commission. So in between also you have held many portfolios. Yes. So of all the portfolios, which was your most challenging one? Is there any specific one? See, I'll have it wasn't. I wouldn't say most challenging, but most interesting, which I like most. That could be the way. So I like to do things which I interest, and the challenge में लेने से ना थोड़ा ये हो जाता है, but where my heart goes, that's way. So I've had a very nice and very fulfilling tenure in Arunachal. I've looked after so many of that one. So challenging बोलने से भी interesting, it is different aspect. So when I was Secretary Culture Affairs, I was looking after the research department, art and culture and all. So research department is very rich in academic sense. It was very good. Then, if you put that way, I would say sports and youth department. Sports. So I was Secretary of Sports and Youth Department for 5 years. And that time we have held many tournaments here, national level tournaments also. And during last 5 years, जब मैं था, तो उस समय में part of medals, gold medals, जो अरुणाचल अभी काफी मिल रहा है ना, उधर से स्टार्ट कर लिया। तो हम लोग डायरेक्टर के साथ में हम लोग वही बोलता था, हम लोग अभी 5 years का हम जितना मेडल मिला और उसका पहले अरुणाचल जब से अरुणाचल उसका मेडल एक बार तुलना करो ना। तो those 5 years we got more medal than whole of अरुणाचल हिस्ट्री में जितना मिला उससे भी ज़्यादा हम लोग मिला। So that was one of means a very fulfilling. And that is not because we were leading the thing. Maybe I followed my father's principle. We let the associations do. Say for example, the Karate Association is there. Wushu Association is there, the Boxing Association is there. So we let open the platform where they can be free and like
they can encourage their own players. तो freedom का साथ में ना सब लोग national level, international level में सब मिल गया. Okay. So trying to free them from the shackles of the bureaucratic Okay. role, but instead of we governing, we creating a platform and paving the way for them to excel in their own way. That's a very good approach because having power, but at the same time, being in charge, you have to be very strategic of not misusing your power and letting it go with the flow. Yeah, we are. We always have to remember we are a public servant, and we are not there to flex our muscle power or power authority. We are there to facilitate the public, the services, or in terms of sports, to facilitate the sports person to excel in their field. So at least that has been my approach, facilitating. So facilitating, not imposing, facilitating. Yeah. Facilitating is the word. Yeah, the facilitator. Yeah, true. This year, in the last Commonwealth, even one of the sisters from Arunachal got bronze also. So looking back, people are actually doing good in sports nowadays quite a lot. Or pehle, because maybe they weren't getting much opportunities, and at the same time, discouragement was there. क्योंकि स्पोर्ट्स पे नहीं हो पाएगा. This was the main concern कहीं ना कहीं, still to this date. So with good initiatives, I'm sure a lot of people will look up to it कि इसमें भी they can excel. See, Arunachal government has given lots of focus. I'll tell, when Tuki sir was a chief minister, so I was secretary sports, his focus was on the sports. After that, President Pema Khandu, he became chief minister and he was Minister of Sports and Youth Affairs. So that time also I was secretary. उसका भी ना पूरा फोकस स्पोर्ट्स का होने से उसका कुछ हिजक नहीं आता है. ओके स्पोर्ट्स का है कर दो. दैट इज द मींस वेरी एनकरेजिंग फैक्टर. मेरा ख्याल से अभी जितना भी आ रहा है इट्स बिकॉज ऑफ that factor. The authority at the highest level, they've been really encouraging the sports person and sports department. काफ़ी मैं अपना मेरे को इट्स माय पर्सनल सिंस सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रहकर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. पर्सनली आई हैव सीन, पर्सनली आई हैव फेल्ट इट. मोस्ट चैलेंजिंग एंड द वे द गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ द स्पोर्ट्स साइड ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट. So I wanted to ask you, how do you approach a failure or setback, like be it personal, be it professional, throughout your journey? How do you approach a failure? See, we face in life, I don't know, मुझे तो जितना भी दिखता है, we fail more failure than success in life. So every day we fail a lot, और उसमें कुछ success रहता है. So the failure should be, it's a frustrating thing, but then it's so much part of life. So मुझे तो यही सोचता है कि life will go on ना, एक फेलर से खत्म नहीं होता है. क्योंकि हर सुबह से शाम तक तो 3-4 जगह तो हम फेल हो चुका ही होगा जब तक मैं सोऊंगा. तो मीन्स नॉट इट रियली डजंट डिस्करेज मी टू मच. तो फेलर इज पार्ट ऑफ लाइफ. And then that you have failed means you have thought of doing something and you have done something, therefore you have failed. ना, अब फेल हुआ मतलब आपने कुछ किया है इसलिए फेल हुआ ना. That itself is a success. फिर वो सोता रहेगा तू क्या करेंगे, कुछ तो होगा नहीं. फेलर का भी बात नहीं रहता एक्सेप्ट सोने का भी फेल हो गया. तो कुछ तू क्या, कुछ तू सोचा इसलिए तू फेल हुआ. So it's a failure is something, it's just self-justifying कि हम कुछ कोशिश तो किया है. But that's a very good way to look at it. कि आप कुछ किया तो है. हाँ. तो failure is a success in itself. Failure is a success. You were a part of codification of customary laws and development of cultural policy for Arunachal in the year 2018. तो आपको क्या लगता है, क्योंकि people keep on saying हम लोग का customary law, हम लोग का customary law. Is there a set written records या is it how much कितना important है change? See, it's like this. The customary law
we have our customs, we have our tradition, and I was secretary research, so that gave me an opportunity. उसको मैं आगे ले जाते हुए I have taken up with the government कि we have to codify इसको customary law के. Now I have held quite a number of workshops. जितना भी prominent उनसे भी काफ़ी मैंने workshop कराया है, over the dinner, over the tea, in a conference government fully formal way. मैंने काफ़ी we tried, but we have not yet codified it fully. Okay. Customary laws have been done up, but once you get into the ground, lots of differing opinion comes. तो customary law हम लोग ये सोचते हैं कि many a times we think कि पुराना समय में ठीक था, customary law ठीक है. मेरा ये कहना है most of customary laws are not good. Okay. First thing, see in our own society, property right ladies को नहीं देता है. So many things, it's discriminatory. It is Oh, it discriminatory. is discriminatory. And then about the vicar also, we always said that might is right used to define our customary life. आपका पास बड़ा family होगा, you will be more influential and all those things. So customary life, but then it does not mean कि it doesn't have a good aspect also. So we need not honeymoon. Customary law is good, always good. We have to say कि these are the parts of the customary law which should be done away with, and these are the part of the customary law which we should codify and follow. तो वो definition में lots of argument भी हो जाता है. अच्छा. तो that has been अभी तक समय तो लग रहा है, but the process is on. Okay. Okay. So it's अभी at present how do you see it कि जो भी discussion हुआ, was it a healthy discussion? Very healthy discussion. And who are the stakeholders? इसमें? So इसमें मैं बताऊंगा. We had it there. We research department. We have a district research officers. पूरा डिस्ट्रिक्ट में रहता है. They are from the sociology इसका बैकग्राउंड का रहता है या who are doing. Secondly, RU में there is a travel study center. AIT. Arunachal Pradesh Tribal Studies. उनको they are the stakeholders. Then we have a Department of Tribal Affairs. Okay. अरुणाचल का ये है. And but all said and done, there is a law department who will have to do the codification. Okay. Because research department scholar too, they will get into the research only. But then that has to be ingrained into the customary law. So law department is there, and then we have legal services. High court का भी मैंने उनसे हमारा अभी जज हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया हाई कोर्ट का, ये हमारा बड़ी हाबुंग साहब. तो उनका साथ में भी काफ़ी उन लोगों का लीगल फ्रेटर्निटी का साथ में भी इंक्लूड करके हमने काफ़ी डिस्कशन किया है. सो इट्स अक्रॉस द ट्राइब, अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, ऐसा करता है. पीपल हैव बीन वर्किंग ऑन इट. होपफुली समडे थिंग्स विल कम अप. द गुड पार्ट ऑफ द कस्टमरी लॉ विल बी part of our law, and then government of India will give protection to it. I hope so. We all hope so. Yeah. Like in a progressive world, Yeah. we cannot stick to something which takes us decades back. Yeah. वो we नहीं हो cannot. सकता है. हाँ. So इसलिए on a customary law बोल रहे हैं, whichever is forward looking, that part of customary law we should take, because customary law में those days lots of अभी जैसा बोला discrimination काफ़ी हो रहता है. And you know, like एक लो इसके लिए एक लो अलग है, ऐसा काफ़ी है. Okay, okay. Gender discrimination is there, societal discrimination is there. और इधर से आने से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो सब मिस नहीं रहना है. We have to go ahead. Yeah, We have to I'm sure there are certain customary laws also which are very significant, which हम लोग ऐसे discard भी नहीं कर सकते. But at the same time, changes have to be made, no, for it to move forward. Yes. With time. Yes. ऐसा भी I'm sure there are many. So I really hope इसका codification हो as a whole अरुणाचल का, और वो progressively थोड़ा आगे बढ़े with the new generation and new time. हमारा see until Guwahati High Court had carried out a very extensive work on this one, and we have our हम लोग का एक elderly person है हाबुंग पाया.
he has written a very good book on customary laws of Apatani. Okay. So I had it around 2010-11 को मैं उनको मिला था. मेरा पास वो कलेक्शन भी है, वो बहुत अच्छा बढ़िया है. So he had written for the Guwahati High Court. अच्छा. गुवाहाटी हाई कोर्ट से लिखा था. तो ऐसा ही काफ़ी लोग भी बहुत लिखा है, but then that was he was sanctioned by the Guwahati High Court. Okay. Not Arunachal wala. No. So there was another initiative which was one of its first kind. Crowdfunding was done, and then Zero का road के लिए Better Zero initiative was done. तो वो कैसा हुआ? तो crowdfunding का ना I'll take some time there. हमारा जो है एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट रहता है कि अपातनी लोग कंजूस है, अपातनी लोग पैसा नहीं निकलता है, अपातनी लोग सोसाइटी के लिए आगे नहीं आता है. लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस हमारा अपातनी साथी लोग के साथ है, जस्ट अपोजिट है. They really come forward the society, and they are very liberal with their purse when it is a question of society's interest. So, means I have such a very good experience with the people of Apatani and then social mobilization. Okay. So, Beji was not the first instance we did the crowdfunding. Achha. Then what was it? I'll tell. My first experience was long time back, 2003. We have a hijab school where I studied that one. तो वहाँ में जब हमने गोल्डन जुबली आ रहा था, बाकी स्कूल का गोल्डन जुबली हो चुका था, देन हमारा हिजाब स्कूल का नहीं हुआ. 2003 में 50 years हो गया था. When we approach our elders, तो उन लोगों के पास फंड नहीं है, नहीं करेगा बोला. At that time जिला परिषद मेंबर was there, अंचल समिति मेंबर was there. Then a few friends of us, we said okay हमारे पास 10,000 और लाल चाय करके हम लोग करेंगे. So we had a budget of around 20,000. Okay. Then we saw तो पैसा कलेक्शन में फंडिंग में that time there was no social media. We said कि we'll not ask anyone to give. As I said, facilitate. Whoever is interested, please give बोल के. Okay. तो आप दो या ना हो आप शामिल हो जाइए, लेकिन ना शर्म मत करिए, नहीं दिया उनका नहीं आएगा मत करिए बोला. तो द बजट के 1 लाख हो गया. देन थोड़ा देर बाद 2 लाख आ गया. फिर आ गया. देन वी हैड 1 लाख का बजट किया, पैसा है तो फिर 2 लाख का बजट किया, फिर 3 लाख का बजट किया. फिर वी couldn't budget our expenses as much as we were getting because we got more than 18 lakh, around 18.5 lakh हमको मिल गया, whereas we had planned 20,000. Okay. तो किसी को फोर्स नहीं किया है, जो देना है दो बोल के. So it was a very good experience. तो usually what happens is celebration का बाद में deficit होता है. तो deficit होकर हम लोग इधर उधर पैसा मांगना पड़ता है. तो all that incident we had a saving of more than 5 lakhs. Okay. कराया फिर सेविंग भी कराया. That was my first experience with the crowdfunding. Okay. And I saw कि people really they come forward. And that was for that one. But then for the society as a whole, when I was in Shillong, यहाँ का सोशल मीडिया वाज इन ए नेसेंट स्टेज. फेसबुक का ये था. तो हमारा जीरो का ड्रग और अल्कोहल का काफ़ी चर्चा होता था. तो आई सेड ओके आई ब्रिंग सम डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट एंड ऑल फ्रॉम शिलोंग. हम लोग जीरो में उसका अवेयरनेस कराते बोले. देन वी डिड अराउंड expenses we expected to be around 30,000, not much, because I would bring them. So there also, when I brought them, हमने यहाँ 3 दिन का कराया. Everyone was competing to donate. Okay. कुछ लोग पैसा, कुछ लोग अपना घर में खाना खिलाएगा, कुछ लोग प्रेजेंट देगा बोल के. Okay. बहुत बढ़िया. And that also we had a saving. Okay. उन लोगों को आया, उनको हमने डॉक्टर लोग को फी भी दे दिया. खर्चा पूछा करने के बाद में भी सेविंग आ गया. तो दैट सेविंग अराउंड 10,000 समथिंग में खाता. बिकॉज आवर बजट वॉज 30,000, लेकिन हमने अराउंड 70 समथिंग 80 मिल गया था वो खर्चा के बाद में. और नाउ दैट ट्रेजरर वॉज आवर फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया बंदा है, हागे गुंतो, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है अभी. ही वॉज द ट्रेजरर. तो दैट 10,000 पता है
we have used it this year to build the market shed and the parking lot for eternal ground. वो सेविंग 10 years बैक वाला. तो इस तरह का ना वी मैनेज हम पता नहीं सोसाइटी से वैसे है ना. बेजी का बात तो हमें आते आप भी आया होगा. कितना रास्ता खराब था, बहुत खराब था. जहाँ भी जाएगा फर्स्ट कमेंट विल बी अबाउट द बेड रोड्स अबाउट जीरो. तो हम लोग को भी उग गया. तो आई हैव ए वेरी गुड फ्रेंड डॉक्टर ननी बात. तो एक बार वो फेसबुक में अपडेट किया कि वो जीरो गया था, जीरो जाकर एक्सपेंस हो गया. तेल का दाम तो 2000, रिपेयर करने में 15,000 चला गया बोल के. तो आई पुट ए चैलेंज. तो आप फेसबुक में क्यों कंप्लेन करते रहते हैं ना, लेट अस डू इट. तो हमारा व्हाट्सएप में भी रास्ता सब मीन्स दे विल कीप कंप्लेनिंग. तो ऐसे लेट्स स्टॉप कंप्लेनिंग, लेट्स टेक थिंग्स इन आवर हैंड. हम लोग खुद करते हैं. ओके. देन आई हैड अपडेटेड इन फेसबुक ग्रुप हु आर इंटरेस्टेड प्लीज कम टू माई हाउस इतने समय को. तो उधर में हमारे पास 4 बंदा आया. तो 4 बंदा हम लोग ने बैठ के कि व्हील ठीक है जीरो को हम लोग रिपेयर करेंगे बोल के. तो डॉक्टर नानी तमाजोस हो गया, डॉक्टर नानी बात हो गया, मदन तचो हो गया, कागो आलिंग हो गया, ताकू चातुंग हो गया, एंड देन पीजी तागो हो गया. तो हम लोग ले लिया. एंड देन वी स्टार्टेड अपलोडिंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप कि हम लोग करेगा. हमारे पास 1 लाख आने से हम लोग 1 लाख वॉट ऑफ रिपेयर वर्क वी डू. 2 लाख आने से 2 लाख वॉट ऑफ देगा. लेकिन जो लोग देना है आप लोग दो. दिस इज द अकाउंट नंबर. बट इफ यू आर गोइंग टू ऑडिट मत दीजिए. ओके. दिस विल बी नॉट ऑडिटेबल. आपको भरोसा है तो दीजिए, भरोसा नहीं है तो मत दीजिए, कोई बात नहीं है. तो देयर इज नथिंग कि उसको नहीं दिया बोलकर भी हम लोग किसी से दुखी नहीं है देना. वी स्टार्टेड. तो 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया. देन वी स्टार्टेड गेटिंग दैट वन. तो वी सेट द February 25 February 2019 को हमने स्टॉप कर दिया और मत दो बोल के. द रिक्वेस्ट केप्ट पोरिंग इन टिल 28 रखो बोल के. फिर 28 तक रखा. फिर अगेन से देयर वाज ए प्रोटेस्ट. पीपल वांट टू वो घर में आकर दे रहा है, उधर दे रहा है, मेरा जितना मेंबर को दे रहा है. वी आर नॉट एबल टू हैंडल द डोनेशन. ओके. देन देयर वाज सरप्लस ऑफ डोनेशन. यस. तो फिर हमने 28 को रोक दिया. फिर प्रोटेस्ट आ गया. देन वी सेड ओके अभी नथिंग डूइंग. 5 मार्च इज द लास्ट डेट. उसका बाद और किसी से नहीं रहेगा. फिर आप लोग गुस्सा मत करो, हमको बोलना पड़ा. देन वी स्टॉप मिडिल ऑफ मिडनाइट ऑफ 5 मार्च. उसका बाद में स्टिल दे केप्ट कमिंग. हम लोगों ने नहीं लिया. तो वी डिड इट द स्ट्रेच फ्रॉम हियर पाई गेट टू पाइन ग्रुप. हमने पूरा सेल्फ हेल्प में किया. एंड देन उसका बाद में जब हम लोग कर रहा था वी नीडेड जेसीबी हो गया, ट्रक हो गया. कभी ज़रूरत होने से ना वो आदमी लोग आकर पूछते हैं मेरा जेसीबी ले जाओ, ट्रक लेके जाओ. सो वी डिड इट. एंड देन वी गोट द फंडिंग. मोर देन 45 लाख हमको मिला. एंड रिपेयर वर्क हम लोगों ने उस समय आप लोग शायद देखा भी होगा हमने किया. एंड दिस रिपेयर वर्क वीडियो भी गया. एंड देन ये इसको वीडियो को लेके हमारा गवर्नमेंट, सीएम सर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, हमारा अपना एमएलए, वो वीडियो को लेकर दिल्ली तक जाकर वहाँ का पीएम एंड देन एमओआरटीएच का मिनिस्टर हमारा ये क्या नाम है उधर में उसको भी दिखाया कि देखो हमारा सड़क इतना खराब हो गया. पब्लिक सड़क में उतर आकर खुद बनाने लग गया. सो ये हाईवे को जल्दी से सैंक्शन करोगे. बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. इट हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो टू गेट द फंडिंग. ओके. फॉर ट्रांस हाईवे. या ट्रांस हाईवे इतना खराब हो गया. आदमी उतर गया, अपना पॉकेट से निकाल कर रास्ता बनाना शुरू किया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोग जल्दी सैंक्शन करिए बोल के. that was a huge success. So I remember people saying कि अब पता नहीं लोग सक दिया अपना खुद का उसको इतना खतरनाक से बनाया कि मतलब हम लोग तो इतना ऐसा जमा करके झगड़ा हो जाएगा. ये लोग कैसे बना लिया. हाँ. तो ऐसा करके वी सेड कि ऑडिट करना है तो मत दो. फिर भी दिया. सो इट्स बीन वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. तो जितना भी आदमी लोग बोलते हैं, हमारा यंगस्टर को भी बोलते हैं, दे हैव बीन सेइंग दिस एंड दैट. ऐसा नहीं है. वी हैव बीन वेरी गुड.
And I'll share another incident also, because अब बोल ही रहा है तो मैं incident share ही कर लेता हूँ. Sure. 2014 our Avantagge Taki got elected. तो 2014 में there was a civil service exam also. तो हमारा जीरो से भी काफ़ी लोग मिला था civil service. तो he had organized a felicitation for the new officers. Okay. SC Continental में. तो the typical thing started with lots of, for him to is a new and he was very enthusiastic. अभी देखो जीरो में has done lots of things, good things, हाँ. तो उधर में वो typically हमारा एल्डर शुरू कर देगा. हम लोग तो अपातनी लोग तो माइनॉरिटी है ना, पॉलिटिकली विक्टिमाइज है, नहीं सकता इसलिए पढ़ाई में फोकस करो, सब बोलने लगा. तो हम बोला बीच में हम ऐसा ऐसे रिलेटिवली यंग 20 years बैक तो थोड़ा यंग ही है ना, अभी बुरा उनसे भी. ऐसे आई वांट टू स्पीक. तो हमारा एमएलए साहब भी बोल दिया. तो उसके बाद में हम बोले नहीं, हम सोचा पहले नहीं बोलेगा, मुझे बोलना ही है. तो मुझे एक मौका दिया. तो हम बोला कि सी टुडे अगर हमारा दिल चाहता है तो बिकॉज ऑफ हमारा एल्डर लोग का कारण में बहुत चीज़ में अच्छा किया, बहुत चीज़ में दिल चाहता किया, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वी आर नॉट माइनॉरिटी. हमारा 9 लाख में हमारा 45,000 है. दैट मीन्स जितना भी है वी आर आई थिंक 3rd 4th लार्जेस्ट एक कम्युनिटी है विद इन अरुणाचल. तो हम लोग माइनॉरिटी कैसा हो सकता है? वी हैव टू गो. हम लोग अपना को हमेशा हम लोग मेजोरिटी बोलना है. वी आर मेजर ट्राइब. तो उधर में हाँ बोला. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी एवरीवन नाउ सीइंग अपातनिक बीइंग वन ऑफ द मेजर ट्राइब. ये होता है बोल के अभी आपको सब भाषा में सुनाई देता है. प्रियर टू 2014 आप सुनिए किसी भी भाषा में हम लोग तो माइनॉरिटी है, हम लोग को तो नेग्लेक्ट करता बोल के. सो आई हैड एड्रेस माई द यंग ऑफिसर्स कि हम लोग वी आर द मेजर वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल, नथिंग टू माइनॉरिटी, एंड देन वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड. अभी डिस्क्रिमिनेटेड होने से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिसर कैसा हम लोग का हो सकता है? एवरी कॉर्नर यू मूव, एवरी कॉर्नर ऑफ अरुणाचल यू विल फाइंड एन अपातनी. डिस्क्रिमिनेटेड होने से मिलेगा? अभी आप देखो बिजनेस में देखो हमारा अपातनी लोग इतना जगह आगे, सब जगह में कॉन्ट्रैक्ट तवांग जाओ अपातनी कॉन्टेक्ट कर रहा है, तिराप जाओ अपातनी कॉन्टेक्ट कर रहा है. डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा? अभी देखो पॉलिटिक्स में भी हमारा पादी यूए साहब मिनिस्टर रहा, PWD मिनिस्टर रहा, सब रहा है. There has been no, only it has been a mental picture we have made. We are being victimized because we are minority. No, we are not minority, we are majority and we have not been victimized. जहाँ हम नहीं सकता था, except for the natural way of हम एक दूसरा को थोड़ा सा देख पुल करेगा, वो तो नेचुरल में चलता रहेगा. Besides that, there has nothing been like this. इनको अपातनी को victim है. So stop carrying that victim mentality, ना, and be assertive about yourself. So I've seen quite a change. I'm quite happy about that. Okay. तो वो भी मैं सोचा कि मेंटल जो अभी अपातनी लोग कंजूस है, सोसाइटी के लिए नहीं आता है, बोला है मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो आता है. Okay. And on this concept also, we are not a victim. We are there. We are on par with everyone else. Or also, Miss, I've done my small bits. थोड़ा सा. That's good that you're telling us about this on the call, क्योंकि कहीं ना कहीं to our larger audiences. Yeah. Look at our roads. Even prior to the Trans Highway, we did donate it. Like he said, budget was 1 lakh. We reached till 45 lakhs. So yeah. So it's like that. And then the latest was that Gree ground, which we again that lots of people are encroaching between that one. When we initiated, we took, हमने बोला, within that evening itself, we got around 3 lakhs. Okay. And in next 4 days, we got more than 10 lakhs. अभी हमारा पास donation जो दिया, we have around 23 lakhs. Okay. Wow. आप सोचो, now इस बंदों को आप कंजूस बोलेंगे, सोसाइटी के लिए सोचते बोलेंगे. True. That's we have a very wonderful people in our society. I think Apatani people in general are they don't shy away from things that are progressive. Yes, they don't shy away. Oh, shy away नहीं करते. So in our last segment, I would like to ask for you to share some advice to inspiring candidates and individuals and to our young or larger audience.
So, in what way would you want me to say? Aspiring individuals who are preparing for exams in general and employment as well. So any message from your side, from your experience? My experience, well, set your goal and don't shift your focus away from that goal. जब focus होता है ना, then the laser cuts everything. It's because it is focus. Light को focus कर दिया ना. So our energy, our attention also, when we focus in something, वो ना किसी को भी कर देगा. Okay. So you can compete with anything. It may be studies, it may be business, it may be sports, or in politics. If you are focused, you will go ahead. So set your goals. Find yourself a certain challenges which you want to overcome, and then get ahead. Now, most of people would like to go into civil service exam and get into. Well and good. Find out, go ahead. Some may want to go to business. Go ahead. But focus. And then when you are focusing, prioritize your day. ये इसको prioritize करो. दिन में मुझे इतना वो एग्ज़ाम करना है. वो एग्ज़ाम को करने के लिए मुझे दिस इज द टाइम, ये समय को इधर यूज़ करना है, ये समय को उधर में यूज़ नहीं करना है ना. नोट डाउन. राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ओके. राइट डाउन योर थॉट्स, राइट डाउन. तो उस तरह का है. एंड देयर आर many inspiring personalities, but I'll go with my own experience. Most inspiring person are you, each of you yourself. Okay. Nah, okay. I get into it, and then you have passed through so many difficult moments, difficult times, but you are still alive. Means you have come out of that difficulty, and then you have moved ahead. So remain focused there. That's my idea, and then dare to think differently. Okay. Dare to think differently, and means society का उसमें mental block में नहीं रहना है. Okay. तो yesterday I was addressing Apatani Student Union का program. Must be a program. पूरा स्कूल कॉलेज को रखा है, तो I was given some time. तो देट वॉज माई एड्रेस कि आप लोग हैं, माँ पिताजी का बात सुनना है, बिकॉज नो वन लव्स यू लाइक योर मदर एंड फादर. लेकिन माँ पिताजी हर चीज़ जो बोलता है वो राइट है बोल के मत सोचो, बिकॉज आई ग्रो अप इन 70s and 80s and 90s. My children are growing up in 21st century. My outlook was in that context. And your outlook is in this context. So I will always address you from that context. इसलिए don't be trapped in what your parents think is good for your life. Not that you should discount it, rebel. If it is good, you go ahead. But keep your mind open. Okay. Is it really good? उसका बाद चलो. तो माँ पिताजी का हर चीज़ को मीन्स उसका जैसा बोलता है ऐसा ही करना है बोलते हैं, ऐसा नहीं है. तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली. ओनली शिप्स गो इन हर्ड. ह्यूमन बीइंग शुड वॉक देयर ओन पाथ. ट्रू. तो अपतनी में भी एक है, मिलो वैसा हिरू वैसा है. सब लोग अपना अपना रास्ता पकड़ लेना चाहिए ना, निकाल लेना चाहिए. सब लोग अपना अपना ज़िंदगी में रास्ता ढूंढ लेना है. माँ पिताजी का एक समय था, भाई भैया का एक समय है, मेरा अपना समय है. आई विल फाइंड माई ओन वे इन लाइफ. दैट शुड बी डन. और एक है विच आई वांट टू डू इज विच आई मैंने डीके कन्वेंशन हॉल में भी एक तो यूथ लीडर ट्रेनिंग हुआ था. तो देर ऑल्सो हमारा मिनिस्टर साहब, यूनियन मिनिस्टर साहब, यूनियन साहब आए थे, हमारा CM सर, everyone was there, and कॉलेज स्टूडेंट्स फ्रॉम every place had come there. तो उसमें भी यही हम बात चलाता है. एंड द सेकेंड थिंग विच आई सेड वाज कि अभी हम लोगों ने ये मोर्चा चलाया है कि सेव गर्ल चाइल्ड. ओके ना, एंड देन एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरमेंट. टुडे वी हैव to shift away from there,
Because boys are lagging behind girls. Okay. So I have written an article also, boys pull up your socks बोलके. Okay. तो क्या होता है, क्लास 10 में टॉप 10 में से 8 गर्ल्स होता है, 2 लड़का होता है. क्लास 12 में टॉप 20 में से 15 गर्ल्स होता है, 5 लड़का रहता है. देन सिविल सर्विस एग्जाम अभी एपी से देखेगा. तो आई साइटेड द एग्जांपल ऑफ इन दैट आई थिंक एक तो वेटरनरी का हुआ था. आउट ऑफ 21 कैंडिडेट सक्सेसफुल कैंडिडेट 18 वेर गर्ल्स. Okay. एग्रीकल्चर का हुआ था. दैट वाज आल्सो 22 में से 17 वेर गर्ल्स. Okay. So there has been a lopsided development. Okay. So इसलिए हम लोगों ने बैलेंस लाना है अपब्रिंगिंग में, बॉयज एंड गर्ल्स में. वी शुड इक्वली फोकस ऑन Boys and girls. गर्ल्स. जितना फोकस करते हैं हम भी. आई ऑल्सो हैव माई ओन चिल्ड्रेन, डॉटर्स भी है एंड सन्स भी है. आई गॉट 2 डॉटर्स एंड 2 सन्स. तो नेचुरली और ना हम लोग बेटी को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं. तो आई हैव टू रेसिस्ट दैट. Okay. मीन्स आई शुड टेक इक्वल केयर ऑफ माई सन्स ऑल्सो. Okay. जितना वो बेटी लोगों दिन रात सोचते रहता है अभी बेटी का क्या होगा, शादी हो जाएगा तो उसको काम मिलेगा कि नहीं है, उसका ससुर अच्छा होगा कि नहीं. इसलिए बेटी को अच्छे से पढ़ाई करो, अपने से कमाने दो. उतना इंतुसिज्म उधर चला जाता है कि कहीं बेटा बिना काम का रहेगा तो क्या होगा, वो ना पीछे में रह जाता है. Okay. वी शुड नॉट बी पुश बिहाइंड. Equally जिस दोनों तरह बेटी के लिए सोचता है, डरता है कि मेरा बेटी बाद में क्या होगा, बेटा के लिए भी डरिए, उसको भी आगे बढ़ाइए ना, वो करना है. एंड सेकेंडली इन द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो वी यूज टू हैव दैट गर्ल्स जहाँ में हॉस्टल खोलता था. अभी एक ट्रेंड चल रहा है, बॉयज आर नॉट गिवन हॉस्टल एडमिशन. Okay. आप भी पता होगा यहाँ में भी जीरो में भी लड़का लोगों नहीं रखता है. लड़की लोग के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया हॉस्टल है. यू टेक योर बॉयज, सब जगह जाओ, एक कोने में जैसे तैसे ऐसा ऐसा में रखा हुआ है. तो माई ओपिनियन वाज कि अगर गर्ल्स का हॉस्टल रखता है तो ना बॉयज ऑल्सो शुड बी देयर. अगर बॉयज का हॉस्टल नहीं रखेगा तो गर्ल्स का भी हॉस्टल मत रखिए. सो एनी स्कूल हु इज हैविंग should have give equal opportunity to boys also, Okay. to girls also. Okay. Boys झगड़ा करता है बोल को उसको सड़क में फेंक नहीं फेंक देना है. True. ना झगड़ा करता है, ये करता है, वो करता है बोलकर नहीं फेंक देना है. They are not to be thrown. They are to be cultivated. They are to be nurtured. And उनको भी प्यार से reintroduced. उसको भी प्यार से रखिए, उनको भी मौका दीजिए. तो that was my appeal to the government also, to the young that also. Okay. वो इस तरह का है. अभी ये जब नहीं होगा ना, देयर कुड बी सम सोशल डिसबैलेंस एंड द बॉयज को कॉम्प्लेक्स आने लगा, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज गर्ल्स का दे आर गोइंग अहेड. आप जहाँ में मीटिंग जाओ यू विल सी मोर गर्ल्स या कॉन्फ्रेंस में, एक्सेप्ट फॉर द यूनियन मीटिंग्स. हाँ, अभी यूनियन वाला भी तो लड़की ज़्यादा आता है. बट देन जहाँ जहाँ में भी हो, कहीं कुछ प्रोग्राम हो गया, यू फाइंड मोर लेडीज देन गाइज forthcoming. तो भाषण देना है, लेडीज आता है बिना हिचक के. कंपेयर करना है, लेडी आता है. बिजनेस करना है, लेडी आता है. तो इतना में भी इन माई राइट ऑफ आई हैड सेड कि ईच ऑफ यू हु आर रीडिंग माई आर्टिकल, एक बार गंगा से लेकर बंडोरा तक ड्राइव करके जाइए. जितना भी लोकल बिजनेस पर्सन है, 99% are women, not men. अभी एग्जाम में भी लेडीज, बिजनेस में भी 99% लेडीज. तो ये सब अभी स्पोर्ट्स में भी देखो लेडीज आर कमिंग. तो वी हैव टू हैव ए बैलेंस ग्रोथ. हम लोग ना और नेग्लेक्ट भी, लड़का लोगों को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है. ट्रू. एंड कॉम्प्लेक्स नहीं देना है. बिकॉज व्हेन अगर लेडीज लोग आगे निकल गया तो वो ज़्यादा स्मार्ट से बोल रहा है, बेटर ड्रेस एंड ऑल, बॉयज ये रहता है. तो दिस आई डोंट नो, आई मे बी पुशिंग टू. इसमें भी मैं दिस आर्टिकल आई हैव रिटन लास्ट ईयर. हाँ, बॉयज पुल अप ईयर है, लॉन्ग टाइम बैक. दैट वाज इन 2007.
that those days आपको बहुत चौथा होगा. WhatsApp was not there, Facebook was not there. एक Orkut बोलता था, Orkut also there. लेकिन उससे ज़्यादा था, we used to have blog spot. Okay. तो blogging हम लोग करते थे. तो in blogging तो हमने वो आर्टिकल लिखा था. What I see change. So when we were there in 1991, 92 में जब हम लोग कॉलेज जा रहा था, शिलोंग में एक अपतनी गर्ल. Okay. And we are around 30 patani boys. And very few Arunachal girls. Delhi में भी वही. And girls used to shy away, चुपचाप रहता है boys उनको. 2007 when I came back from Afghanistan, Delhi में रहा है. You see girls all around. Boys एक कोना में इंदिरा विहार में एक छोटा सा बर्तन में पोर्क तोड़ा लेकर उधर पकाएगा, बियर 2 केस लेकर they will be bitching against that girl. वो लड़की उधर गया था, वो लड़की गया था. Which actually ladies were doing before. Okay. The boys instead of going ahead and taking part in everything, वो bitching में जा रहा है बोल के. That I had written in 2007. Okay. कि we have to mold our sons, boys' mind also. You go ahead. Nah, don't sit having a beer, having a pork and bitching about your sisters and your girls. उधर जाता उधर उसमें बिचिंग नहीं करे. आप लोग भी आगे आइए, कंपटीशन में आएंगे, स्पोर्ट्स में आए, कल्चर में आए, पार्टी करना है करो, जाके करो, कम आए ना. सो वो कॉम्प्लेक्स आने नहीं देना है. वी शुड नॉट लेट दैट कॉम्प्लेक्स कम. वो कॉम्प्लेक्स आने से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा सोसाइटी. True. To any of the genders. Yeah, to any of the, neither the girls should have complex, nor the boys should have a complex. We should have a equal opportunity should be given. तो हमारा अरुणाचल में तो वी हैव ए लेडीज का. आप मुझे अफसोस है आप लेडीज का अगेंस्ट में बोल रहा है, किसी ने बोला. अरे हम लेडीज का अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं. आई एम सेइंग अप्रिशिएटिंग देम. बहुत अच्छा कर रहा है. बॉयज शुड कीप अप विद देम. डोंट ट्राई टू पुल द पर्सन हु हैज गॉन अहेड टू योर लेवल. योर एटीट्यूड शुड बी मूव टू दैट लेवल. And if possible, go ahead. Yeah. Nah. So we have to create a win-win situation. इस तरह का करने बोल के. That was my basic write-up. Oh, catch up with the girl. Okay. Thank you. That's very good. I'm glad you shared that insight. And thank you so much for coming to our show. So thank you, Ate. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you so much for joining us on this episode of The Saturday Show. Please tune in again to watch more episodes. And like Sulu sir said, do not confine yourself. Think out of the box. Find an interest and you be your own role model. So moving forward, please join us again next week for new episodes. And thank you to our venue partner, Hotel Zero View.